नमस्ते, दिस इज़ पूजा। इंडियन ट्रेजर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्लेन चूर पराठा। पंजाबी डिश है। इसे मैंने अपनी आंट से सीखा था जो खुद एक पंजाबी है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और बच्चों और बड़ों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चूर प्लेन पराठे के लिए मैंने होल व्हीट फ्लावर गेहूँ के आटे का डो रेडी करके रख लिया था। इसमें मैंने होल व्हीट फ्लावर लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और हाफ टी स्पून देसी घी डाल के इसको मैंने डो रेडी कर लिया था। नाउ टेक अ मीडियम साइज बॉल डो। जो आप रेगुलर लेते हैं उससे थोड़ा सा ये बड़ा लेना है। थोड़ा सा डस्ट स्प्रिंकल करेंगे। And now roll and flatten with rolling pin. Now spread some ghee. इस पर करीब 1 टीस्पून घी लगाना है। अच्छे से इसको स्प्रेड करना है। And now sprinkle some salt. ये मेरा होममेड सीजनिंग है, इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर रेड चिली पाउडर को स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब हल्का सा आटा इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे। एंड नाउ मेक अ होल इन द सेंटर like this, and with the help of your fingers flap the dough on every side. एक बीच में कट लगाएंगे एंड देन रोल। प्रेस कर देंगे इसको, आटा लगाएंगे और हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। इसको बनाने के लिए डो शुड बी सॉफ्ट एंड स्मूथ। अच्छे से उसमें लोच होना चाहिए आटे में। Now heat a griddle and place the paratha. After 1 or 2 minutes, flip the paratha. You can see the layers. Apply some ghee and again flip. Apply ghee on this side also. And now cook both the sides till paratha gets crispy and
evenly browned. And now keep on a paper napkin and crushed. And see the layers. Keep a piece of butter and enjoy with masala curd and onion or green chilies. Serve hot. Thank you for watching the video.